Low. Okay, guys, we will be starting up shortly. I request everyone to sit down because we are already learning. We are already going late, so okay, third time. So, can I request people at the back to come and sit? Guys on the back, can we start? Okay. Swagatam, Swagatam, Swagatam. Today we are all gathered here to celebrate love of Shubhangna and Sanjay, my Jiju and my sister. And I think most of you know me. I am Ajitesh and I'm Shubhu's brother. So I am asked to do this anchoring just like now, like a few hours back. And she is also doing this on spot. Yeah. She- So myself Purnima, I am Shubhangna alias Radhika's sister, cousin. So we are here to host this cultural event for you guys. So as some of you might not know what exactly this function is, let us tell you. Indian weddings have many rituals, and one of the best ones is the Sangeeth ceremony. Families and friends of the couple dance, sing, and have all kinds of fun activities. It's one of the best ceremonies before the wedding, which increases the bond between the two families, and personally, my favorite. We welcome you all. Hope that you guys enjoy this fun filled evening. Dance your hearts out. Be crazy as you can and enjoy the most. As Radhika already said, she has danced her hearts out and made all the weddings she has attended a graceful one. She'd like the same to happen at hers. So let's give our best and make this day memorable for the beautiful couple. And to start with it, they are here to show it how it's done like a pro. So let's welcome our beautiful bride. Everybody at the back, please sit down. Can you ask them to sit down? They're not even sitting down. It's our beautiful bride's request that everyone gets seated and enjoy her performance. Groom be like, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है. And the best part is groom won't understand the Hindi I'm speaking. If I make some Hindi joke, he'll still laugh. He'll be Laugh like, it up. I don't understand anything, but it sounds good, right? Yeah. Okay, thank you everyone for sitting down. After like probably 100 times. Yeah. So as we were saying, let's welcome our beautiful bride and handsome groom to set the stage on fire. Give a round of applause, please.
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। When I pull up the bass, pull up the All my bass. lover boys in the house, can I see you pull them hands to the air? पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। तू पीछे पड़ा है, तू जिद पे आया है, क्या कहते हैं तुझको तेरे डैडी अम्मा। निकम्मा दोबारा मत पूछना। निकम्मा किया इस दिल ने किया है, निकम्मा निकम्मा किया इस दिल ने किया है। दोबारा मत पूछना। Let's give them a big round of applause. अच्छा यूजुअली ये मैंने नोटिस किया है, ये यूजुअली मेरे पापा का डायलॉग रहता है दैट मम्मा और मेरे घर में मेरी बहन बोथ ऑफ देम आर लाइक वंडरफुल डांसर्स एंड पापा का ये डायलॉग रहता है कि बोथ ऑफ देम हमें नचाते हैं इन शॉर्ट. सो लेट्स आस्क देम कि हाउ डिड दे फाइंड द परफॉर्मेंस. So you are asking a person whose throat is not well today. Anyway, I would have been happy if I could have, but I think they are not the same. They look like a different person, people altogether. An excellent couple. So I really welcome and hope to look forward to seeing more of their performances soon. ओके सो अब अगर आप मेरी जो कोस्ट है वो पहले ही चली गई परफॉर्मेंस के लिए, सो लेट्स वेलकम मेरे कजिन्स गायत्री, पूर्णिमा एंड विजय. ताली बजा दो यार. உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு, முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மெத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு. உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு, முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மெத்தியில செத்து விட தோணுதடி. Sounds of the streets. आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा
nade poduma inna konjam venuma inna nade poduma inna konjam venuma. Wow, that was an amazing performance. Okay, so I would like my co-host to take up the lead now because now I have to perform. That's what happens actually when we have nothing to brag about, but that's what happens when there is a family of talented people. जरा सा मुझ पे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास आ तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर So, as Ajitesh said, not to brag, but since the audio is not available right now, so I'm thinking I should brag. So, Ajitesh has been doing beatboxing since what, 7 to 8 years? And he has improved a lot. He has been posting videos on YouTube and they have got a lot of views and we enjoy his beatboxing. So today, despite his cold and everything and his anchoring, which was like right on, so he is here still to perform for us for the beatboxing. So let's give a big round of applause for Ajitesh. Okay, so for most of you won't be aware about beatboxing, I think. So I'll just give a brief intro. What is beatboxing? It's basically producing, imitating sounds of drums from your mouth. So it's like, so like that. So there are some song that I'm going to perform while beatboxing, along with my Jiju. Can I help you out? Yeah, Yeah? for sure. Can you just give me a beat or something? This Yeah. is a rap song. Guys, I wrote a rap Okay. just for this occasion. Yeah, that's right. I'm not lying at all. I totally wrote a rap Okay. for today. Yo, this is my lyrics. I wrote this. मेरे चैन बेन सब उजड़ा जालिम निज़ार हटा ले I wrote this बर्बाद हो रहे हैं जी what बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरी oh what do you got give me something else man What was that? You said I that wrote it that was your myself lyrics. I wrote that myself No, you copied. what did I copy That's Kacharare. You're just singing it No. in the form of a rap. you should all be standing and saying क्या बात है that was fantastic Not better than my beatboxing Yeah, though. you know, I think I let you guys down. I think we're gonna have two real singers sing it. Do you guys want to hear two real singers sing Kacharare?
So let's Yeah, welcome. okay. So let's welcome groom's brother and mother. Oh. You believe that I wrote that, guys, right? You believe me. Yeah, exactly. See, Ajitesh, I don't know what you're talking about. So another fake singer, real singer. Okay, so we want some, audience participation, some clapping, make us feel at home here. I love the beatboxing, by the way, so I could go all night listening. I think a round of applause for Ajitesh. What do you say? Yes. I can't see the. I can't. नज़र से देखा उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर मेरा चैन वैन सब उजरा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजरा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजरा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले ओ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरारे तेरे कारे कारे नैना 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 ओ मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना ओ कजरारे तेरे कारे कारे नैना
तेरे बातों में के माम की खुशबू है हो तेरा आना बिगड़ में अकेलो है हो तेरा बातों में के माम की खुशबू है हो तेरा आना बिगड़ में अकेलो है आजा टूटे ना अंगराई मेरी अंगराई ना टूटे तू आजा मेरी अंगराई ना टूटे तू आजा कजरारे तेरे कारे नैना कजरारे तेरे कारे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना कजरारे तेरे कारे नैना ओ मेरे नैना छुप के रहना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ आंखें भी कमाल करती है पर्सन से सवाल करती है पलकों को झुकाती भी नहीं पर्दे का ख्याल करती है मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं आजा टूटे ना अंगराई हो मेरी अंगराई ना टूटे तू आजा मेरी अंगराई ना टूटे तू आजा कजरारे तेरे कारे नैना कजरारे तेरे कारे नैना कजरारे कारे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ मेरे नैना हम दसते हैं तेरे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में चौराही निशानी दिल्ली में बल्ली मारा से दरी बेसलम तेरी मेरी कहानी दिल्ली में ओ काले कमले वाले को याद करते तेरे काले नैनों की कसम खाते हैं ओ तेरे काले नैनों के बनाए हीरो तेरे काले नैनों को तो आए हीरो मेरे जाने होता से हो में प्यासे आजा रे ओ तेरी बातों में कि माम की खुशबू है तेरा आना भी गर्मियों की लू है तेरी बातों में कि माम की खुशबू है तेरा आना भी गर्मियों की लू है अंगराई ना टूटे तू आजा मेरी अंगराई ना टूटे तू आजा कजरारे तेरे कारे नैना कजरारे तेरे कारे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ तेरे नैना जुड़वा नैना ओ तेरे नैना जुड़वा नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना ओ कजरारे तेरे कारे नैना कारे नैना ओ कजरा रे हा कजरा रे ओ मेरे कारे नैना
So, what a great song by Preeti Auntie and Ajay. We loved the foreign accent of Ajay and what a melodious voice, Auntie. It was so great. Yeah. So I can feel the accent in Ajay Bhai's song. So the way he was singing, it was quite nice. It's quite catchy actually. So it was a wonderful Adorable. performance. So now it's my mom, then Suchita auntie and Richa Didi. So they are performing a song called Brahma O Brahma, in which my mom is playing the role of a person who wants wife, while Richa Didi is that bride, and Suchita auntie is Brahma, God. So let's welcome them. The round lots of applause. ब्रह्मा ब्रह्मा देवा हो देवा ब्रह्मा ब्रह्मा देवा हो देवा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा दे दे किनारी सुंदर सी ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा दे दे किनारी सुंदर सी मुझे दूल्हा बना मेरी शादी करा दिन रात मैं तेरे गुण गाऊंगा बीवी के बिन नहीं तो एक दिन मैं खा के जहर मर जाऊंगा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा दे दे किनारी सुंदर सी हिरनी से चाल हो रेशम से बाल हो फूलों से गाल देखे जहान होके हैरान सुन हो भगवान चंचल हो ऐसी हो परियों जैसी मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा दे दे किनारी सुंदर सी ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा तेरी विनती सुन ले मैंने सुन ओ ब्रह्मचारी तेरे लिए मैं लेके आया ये सुंदर नारी तेरी विनती सुन ले मैंने सुन ओ ब्रह्मचारी तेरे लिए मैं लेके आया ये सुंदर नारी ये अंग संग तेरे डोलेगी कभी आगे से नहीं बोलेगी तू देखता ही रह जाएगा जब गोरी घूंघट खोलेगी खूब करेगी तेरी सेवा प्राणों से प्यारी तेरे लिए मैं लेके आया ये सुंदर नारी जय हो प्रभु जब तक जी में जान है भगवन तुझको याद करूंगा एक दिन में 100 बार मैं तेरा धन्यवाद करूंगा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा गोरी ओ गोरी जरा घूंघट तो खोल जरा मुख से तो बोल गोरी घूंघट तो खोल जरा मुख से तो बोल मैं हूँ तेरा गुलाम क्या है रे तेरा नाम
होंगी। अरे अरे चल हट परे। ओ भगवान, करते हो मजाक अपने भक्तों से? ये तो माटी का बुत है, इसे जान दे दे, इस बेजुबान को जुबान दे दे। मुंह से कुछ ना कहे तो अच्छी बात है, औरत चुप ही रहे तो अच्छी बात है। मुंह से कुछ ना कहे तो अच्छी बात है, औरत चुप ही रहे तो अच्छी बात है। भक्त, बातूनी औरतों के साथ मर्दों का गुजारा असंभव है। इसकी चिंता आप मत करो प्रभु, छोड़ दो मुझ पर, मैं देख लूंगा। अच्छा भक्त, जैसे तेरे संजोग, जा अपने कर्मों को धो। हटो छोड़ो बलम मेरे फूटे करम, हटो छोड़ो बलम मेरे फूटे करम। कैसी शादी हुई बर्बादी हुई, नई साड़ी नहीं नई गाड़ी नहीं, मेरा गजराला मंगा कुत्ते दो चार, मंगा सोने का हार, मंगा कुत्ते दो चार, मंगा सोने का हार। करेंगे प्यार कल आज होटल में चल, सैर मुझको करा, कोई पिक्चर दिखा, लेते खसमान खा। ये सब अगर नहीं हो सकता तो मुझे दे दे तलाक, चाबी घर की संभाल, मैं चली वापस भोपाल, मैं चली वापस भोपाल, मैं चली वापस भोपाल। ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा, कैसी ये नारी सुंदर सी। ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा, कैसी ये नारी सुंदर सी। जान मेरी बचा, इसे तू चुप करा, दिन रात मैं तेरे गुण गाऊंगा। गूंगी भली सी जुबां इसकी चली तो मैं खा के जहर मर जाऊंगा। ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा, कैसी ये नारी सुंदर सी। ब्रह्मा ओ ब्रह्मा देवा हो देवा। बुला अपने ब्रह्मा को, आज उसको भी देख लेती हूँ। दुनिया का निर्माण तो मैं कर सकता हूँ, खाली झोले मोतियों से भर सकता हूँ। मैं तूफान को रोक दूँ, मैं बरखा को थाम लूँ, परंतु इस अग्नि को मंद नहीं मैं कर सकता। औरत का मुंह बंद नहीं मैं कर सकता, औरत का मुंह बंद नहीं मैं कर सकता, औरत का मुंह बंद नहीं मैं कर सकता। Wow, wow, wow. What a wonderful performance it Definitely. was. One more time, a big round of applause for all of them, guys. A big round of applause. The expressions, अदा, रीचा दीदी, आए है. क्या अदा था उनका? Wow. And it was quite knowledgeable, by the way. At the end, they said that nothing can be changed, if you noticed. So, next coming up is Nathan Uncle for a beautiful song. Can we have a big round of applause? Mic कौन सा ये? இந்த mic आधा? Check. I can't see anything from here. Start.
going to sing a Hindi song. झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन Sorry guys, just hold on. I don't have the lyrics in front of me. Take it. जब घुंघरूं सी बजती है बूंदें अरमां हमारे पलके नमूंदे जब घुंघरूं सी बजती है बूंदें अरमां हमारे पलके नमूंदे हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन Fade out. Thank you. Wow, that was an amazing performance, Nathan Uncle. So now, it's my parents who are going to dance again. It seems like my dad isn't even aware about it. Let's have a big round of applause for them. चोरी चोरी
आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं। चले आते हो चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे नजारे हम क्या देखें। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। वाह रिवर्ब। मेरे पापा का बेशक कभी गला खराब ना हो, लेकिन स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट कर लिए। नेक्स्ट we welcome मेरे जीजू for singing a song, and Preeti ji for a song. It's only fair that I sing with the second son, because he might start crying. Don't cry.
सजन कैसे, मैं ऐसे ना घबराऊं सजन कैसे, आए ना कैसे मुझे लाज सजना, छुआ ना देखो मुझे आज सजना। तू ना जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। तेरा फूलता है अंग तेरे अंग में है रंग, तेरे अंग में है संग घोड़िए, तेरे रंग में है रूप, तेरे रूप में है धूप, तेरे रूप है अरूप घोड़िए। सजना से क्या है आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। हर दिल में मेरे बस जा मैंने रोका कब है, लेकिन क्या अरमा है मेरा ये तो सब जाने दे। सजना से क्या है आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। बंजारे मन की बात में आई ऐसे, एक राजा को मन मीत बनाई ऐसे, पहनूं में प्यार का ये ताज सजना, करता हो तुम जो दिल पे राज सजना। Take a breath, Sanjay. Brenganeni, तू ना जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। मेरे गीत तेरे गीत में है प्रीत, तेरे प्रीत मेरी जीत घोड़िए, मेरी जीत में भी हार, मेरी हार में है प्यार, मेरे प्यार में इकरार घोड़िए। भूल के सारे कम काज सजनी, छूने दे अंग मोहे लाज सजनी। लाज सजना, चुना ना मोहे आज सजना, That was an attempt. We have, you know, that's a song growing up my mom used to teach us how to sing, and we haven't sang that in what, 10 years maybe? So
Did the song even come out more than 10 years ago? It did. Okay, that story makes sense. Cool. Apparently, my co-host doesn't want to introduce herself for the next upcoming dance that she is going to perform. So, let's give a big round of applause for Purnima. लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली बागरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली बागरा एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन एक हो गए हम और तुम हम्मा तो उड़ गए नंदर ख्वाब देखे झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे सजना अनाड़ी बेईमान ख्वाब देखे झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे सजना अनाड़ी बेईमान Hey mister, you say you want me as your lover, but tell me now, are you a player? Say what? Chicka chicka, chicka chicka. तेरी हर अदा ने मुझ पे ये कैसा जादू किया रे Love's the game I wanna play I am craving for your body now Sexy lady gets me crazy Be my baby give me all your love now Hey mister, you say you want me as your lover, but tell me now, are you a player? Say what? Chicka chicka, chicka chicka. కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా హాయ్ ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా लहरा के बल खा के लहरा के आग लगा के दिलों को जला के करूं मैं इशारा शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना माने माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको
री रे रसिया खिलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया पूछे है तुम्हें सारी भुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया दुल्हनिया टूटी पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके Let's give them a big round of applause. Okay, so now we have an upcoming guest from China. So let's welcome them with a big round of applause. Hello, thank you. मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात चांदनी में आ तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात चांदनी में आ तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 बाबूजी मैं चीन से आई चीनी जैसा दिल आई सिंगापुर का जोबन मेरा शंघाई की अंगड़ाई बाबूजी मैं चीन से आई चीनी जैसा दिल आई सिंगापुर का जोबन मेरा शंघाई की अंगड़ाई दिल पर रख ले हाथ जरा हो जाए ना पागल तू दिल पर रख ले हाथ जरा हो जाए ना पागल तू मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात चांदनी में आ तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात चांदनी में आ तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 ओ बाबूजी मेरा कितना अच्छा हुआ मिला तुझको देख तबीयत बढ़ गई अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की ओ बाबूजी मेरा कितना अच्छा हुआ मिला खुद को देख तबीयत बढ़ गई अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की घूम के मंदिर छू 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 सिंधबाद की सैर कर तू घूम के मंदिर छू 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 सिंधबाद की सैर कर तू मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू
What a beautiful song by Jayanti auntie, and of course, we did great dance. So, special announcement: dinner ready hai. So you can go and get your plates and get it here and enjoy the evening still. So next. Okay, so there's one more performance after which you can go and enjoy your dinner. So coming up performance is of the bride and the mother-in-law. So let's welcome Radhika, alias Shubhangna, and Preeti auntie. Give them a round of applause, guys. दुपट्टा मेरा दुपट्टा मेरा हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा हाय मलमल का लाल लहराए दुपट्टा मेरा हाँ मेरा क्या कसूर उड़ चला जो मुझसे दूर अब ढूंढ के कोई लाए रे दुपट्टा मेरा दामन से फिसला जाए दुपट्टा मेरा अलिया से खिसका जाए सर पे ये हवा का चलन है ये क्या हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा चुन के लाई थी मैं दुकान से दर्जी भी थे मेरी पहचान के मेरी पसंद का रंगो गुलाब लिया था कितने अरमान से बेदर्दी आए तुझे ऐसे क्यों सताए कोई मुआवजा बदले में दे जाए कैसी मनमानी क्यों आनाकानी लौटा दे तीर को कमान पे सुन लो ये पुकार भी थे कितने शनिवार अब ढूंढ के कोई लाए रे दुपट्टा मेरा दुपट्टा मेरा हाय मुझसे लिपटा जाए बिछुआ में अटका जाए सर फिरी ये हवा का चलन है ये क्या हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा What an awesome performance by the mother and daughter. So next coming up is Richa Didi for another song, this time solo for us. हसीली पीली बाकी ओ पलंग तोड़ दे भरम छोड़ दे घबराना बजाए तू दूर से होने क्या दिल के सारे बटन खोल दे खुल के बोल दे सह मेरे हो ना बता दे तेरा आज है प्लान क्या आज बिजली भी गिरवानी है फायर भी लगवानी है तो तू आके बेबी हमरे साथ माँ आ
Kamaria, Najaria, Kamaria, Najaria. हाय रे मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, दिल में तू थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी तो कमरिया हिला दे। हाय रे मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, दिल में तू थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी Kamaria, Najaria, Kamaria, Najaria. What a great performance it was. So after this hilabe performance, we have Nathan Uncle for next song. Please give him a round of applause. Check, check. I got the lyrics this time. समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना कह रही है नजर नजर से अफसाने कह रही है नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने देखो ये दिल की अजब दास्तां है नजर बोलती है दिल बेजुबां
Hello. So, great melodious song by Nathan uncle, Supra Badning uncle. Okay. Super. Okay, so next coming up is the most awaited performance of the evening. So I kindly request all of you guys to please be seated and enjoy this performance. People at the back, can you please take photos afterwards? It's the bride's performance. Please sit and enjoy it. She has prepared it I despite. request everyone to sit down, please. Yeah. Thank you. Can we have a big round of applause? For Radhika. So, first of all, you guys thought like, oh, why did we abruptly stop? It's a special performance. So, first of all, I want to start by saying a special thank you to each and every person who has traveled across oceans, across states, and have made it here to celebrate me and Sanjay. Thank you very, very, very much. This special performance that I'm going to start with is to dedicate to my parents. To begin with, Dad, this is for you. You know, we all know, I'm going to start speaking a little bit in Hindi because proper Delhi light comes out, so my emotions are all in Hindi. बेटी और बाप का रिश्ता जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है. कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाते हैं. आज तक मैंने कभी मेरे मांगने से पहले सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की कभी ज़रूरत नहीं मिलती. एंड साथ ही साथ एक ऐसा रिश्ता है जो आज तक like you know when I said yes to Sanjay and we were together, the first thing that came to my mind is पापा क्या कहेंगे, क्या वो मेरे पापा की तरह मुझे ख्याल रख पाएगा या नहीं. बिकॉज हम सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि पापा की नन्ही परी हैं, तो एक प्यार से कोमल तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है. सो थैंक यू पापा फॉर एवरी सिंगल थिंग. एंड आज भी दिस वेडिंग इज हैपनिंग क्योंकि like both my families, one that I just got and the one that like that God has given me. This day would have not been possible with any one of you today, but Papa, this one is for you. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो.
मम्मा आप अकेले नहीं हो मैं भूली नहीं हूँ आपको मम्मा की हमेशा शिकायत होती है एक जब बेटी होती है ना आई एम श्योर मेरी जितनी भी कजन्स हैं उमा दी को मैं देख सकती हूँ यहाँ से सो आई एम श्योर जितनी भी कजन्स हैं रीचा इंक्लूडेड सारी माओं का कंप्लेंट ये होता है कि पापा को ही देखती है बेटियाँ माँ को तो देखती नहीं माँ को कैसे देख पाएगी वो तो परछाई है जहाँ जाती है ना वो साथ साथ आती है कभी आप अकेले थे ही नहीं तो अलग से कैसे देखूं दिस वन इज फॉर यू मॉम उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे गोदी उठा लेना माँ आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना मैला सा लागे जहाँ आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह ज़्यादा इमोशनल हो गया तो माइक वाले भैया ने माइक बंद कर दिया था so 8 years after I was 8 years old easier to say that way 8 years old मैं बहुत जिद करती थी all my friends had brother and sister to nag with you know मस्ती मारने के लिए स्कूल जाने के लिए एक वो चाहिए था पार्टनर एंड ये पार्ट एडिट कर देना क्योंकि मेरा पति जर्नलिज्म में है तो बात लग जाएगी दिस पार्ट इज जब बताया ना डॉक्टर ने कि वी हैव अ न्यू पर्सन कमिंग इन आवर फैमिली जॉइनिंग अस मुझे डॉक्टर ने जैसे बताया मैं 8 साल की बच्ची हूँ मुझे अपने ड्रेसेस वगैरह शेयर नहीं करने थे ना कपड़े शेयर करने हैं ना शूज शेयर करना है नथिंग दिस इज ऑल मी जो मेरा है वो मेरा है तो मैंने मम्मा से कहा नहीं मुझे भाई चाहिए अब डॉक्टर कहता ऐसे थोड़ी होता है कहाँ से भाई कहाँ से हाउ कैन यू बी सो सर्टेन दैट यू वांट अ ब्रदर आई वाज लाइक नो I want only brother. If you give me sister, I don't want it because I don't want to share my clothes. I don't want to share my shoes. I'm not going to do it. तो पता नहीं शायद भगवान ने सुन ली और gave me a very very sweet brother. हमारा बॉन्ड ऐसा है कि ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ एंड जितना मैंने उसे पाला है पोसा है जितना मैं कह सकती हूँ ही इज़ वेरी 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 स्पेशल हर किसी को ऐसा भाई मिले दैट्स ऑल आई कैन से दिस वन इज फॉर यू तू जो रूठा तो कौन हंसेगा तू जो छूटा तो कौन रहेगा तू चुप है तो ये डर लगता है अपना मुझको अब कौन कहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा
प्यार रहेगा हमेशा भाई से पहले बता देती हूँ इसने एक चीज बोला that मैं भी agree करूँगा. I'm not blessed with one mom. I have two moms. Definitely. अब बारी आती है जो जिस occasion के लिए we all have gathered here is my wedding and words will be very less to express my feelings how lucky I am. You know, when a girl is trying to get married and पहले शादी की बात आती है and I'm sure lot of who have daughters can agree with this that we all have that fear of like how is the groom's parents and how is my daughter going to be and all I can say there is no difference. I actually enjoy a little bit more. थोड़ा freedom ज़्यादा मिल जाता है because हमारे घर पे मैं सासू माँ बन जाती हूँ and वो बहू है. So we kind of exchange the roles in this family. But I love you so much, Mom. Like आज भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें उटंग हो जाती है. But सारी गलतियों को माफ करके you just make sure that I am happy and thanks for making this wedding happening. So I love you guys a lot and Ajbai, like thank you for being there. हर चीज़ के लिए like you've been there every moment, every place and you've definitely taken care of Sanjay. Just like how I did with Ajitesh, so that means a lot. And what should I say about you? But I really love you, and thanks for being my partner in crime. And this one is for you guys. रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए Can we have a big round of applause? That was just an amazing performance. Now, next we are welcoming Ajay Bhai for his song. Let's give him a big round of applause.
Testing. Test. Test yours. Testing. ढोलक में ताल है, पायल में छन। हे ढोलक में ताल है, पायल में छन छन। घूंघट में गोरी है रे साजन, जहाँ भी ये जाए बहारे ही जाए, ये खुशियाँ ही पाए। मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन। घूंघट में गोरी है, सहरे है साजन, जहाँ भी ये जाए बहारे ही जाए, ये खुशियाँ ही पाए। मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी 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 है। प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। ओ प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। कुछ है दिल मन में है दिल, ओ खुश है जो दिल मन में है दिल की तो से सजादी है, मेरे यार की शादी 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 है।
नहीं जहाँ प्यार है, जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है। ओ हार नहीं जीत नहीं जहाँ प्यार है, जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है। लग जगले यार मेरे, अड़ लग जगले यार मेरे देश शादी है, मेरे यार की 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 शादी है। शादी सुन ले बोले जो ये अंगना ये जीवन प्यार के है रंग में रंगना, हंस देगी तेरी चूड़ी खंगेगी कंगना। शादी सुन ले बोले जो ये अंगना ये मन जीवन प्यार के है रंग में रंगना। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। Thank you. That was again a very wonderful performance. Now I'll be having Shubhu's mama mummy, who have came all the way from Jalgaon to attend the wedding, and I think let's welcome them on the stage with a big round of applause. आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 आजा। मेरा ख्याल तुझे है, मैंने अभी यही जाना, सच्चा है प्यार के झूठा, ये है मुझे आजमाना। आजा 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 आजा।
So what a cute performance by the mama and mommy. So next coming up is cousin Vijay to sing a song for you. हाय सो बहुत हिंदी गाने सुन लिए आज एक तमिल सॉन्ग चेन्नई में है என்னவளே அடி என்னவளே எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன் எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம் அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன் உந்தன் கால் கொலசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன் காதல் என்றால் என்றும் கவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன் எந்தன் கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றேன் என்னவளே அடி என்னவளே எந்தன் இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன் வாய்மொழியும் எந்தன் தாய்மொழியும் இன்று வசப்படவில்லையடி வயிற்றுக்கும் தொண்டைக்கும் உருவமெல்லாம் ஒரு உருண்டையும் உருளுதடி காத்திருந்தால் எதிர்பார்த்திருந்தால் ஒரு நிமிஷமும் வருஷமடி கண்கள் எல்லாம் என்னை பார்ப்பது போல் ஒரு கலக்கமும் தோன்றுதடி இது சொர்க்கமா நரகமா சொல்லடி உள்ளபடி நான் வாழ்வதும் விடை கொண்டு போவதும் உன் வார்த்தையில் உள்ளதடி என்னவளே அடி என்னவளே எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன் கோகிலமே நீ குரல் கொடுத்தால் உன்னை கும்பிட்டு கண்ணடிப்பேன் கோபுரமே உன்னை சாய்த்து கொண்டு உந்தன் கூந்தலில் மீன் பிடிப்பேன் வெண்ணிலவே உன்னை தூங்க வைக்க உந்தன் விரலுக்கு சொடுக்கெடுப்பேன் வருட வரும் பூங்காற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் வடிகட்டி அனுப்பி வைப்பேன் என் காதலின் தேவையை காதுக்குள் ஓதி வைப்பேன் உன் காலடி எழுதிய கோலங்கள் புது கவிதைகள் என்றுரைப்பேன் என்னவளே அடி
என்னவளே எந்தன் இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன் எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம் அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன் உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன் காதல் என்றால் வெறும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன் இந்த கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றேன் என்னவளே அடி என்னவளே எந்தன் இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். Thank you. What a beautiful song sung by my dear brother Vijay. He prepared it last minute, by the way, because Radhika wanted him to sing a song for her, and he did that. So that's so sweet of you, Vijay. So coming up next is a duet song by Jayanti Auntie and Bona Auntie. So let's give a round of applause for them. Hello. 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 हंसता हो नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा है दिलरुबा 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 हंसता हो नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा है दिलरुबा 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 पहले तेरी आंखों
What a melodious song by both the aunties. Thank you so much, auntie. Now coming up is a performance by the bride's mother and the groom's mother. So let's give a round of applause for Chitra and Preeti auntie. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान That was an amazing performance. So my mom is going to do one more song.
So I think we are done with the performance for the day. Now we are going to have concluding remarks from my Jiju and my sister, followed by few more concluding remarks. I'm gonna let Sanjay lead this. Oh, thank you. How nice. For once, for once. For the rest of the life, I'm going to lead. So this opportunity he can take. That's okay. So I apologize ahead of time. I only speak English fluently. So I hope you all can understand what I'm saying. And if you don't, just give me a woo and Shubhu will translate. Speaking of which, this is my first time in India ever. How about that? First time. And who needs the Google Translate app when you have your very own Shubhu? Firmware updates, best software, the app is super fast, and she's super reliable. I didn't know that was my role. That's what I... Yes, I didn't yes, know that. Google Translate, everything else. No, but let me just say, it has been so amazing being here in this country, not just for this event, but just experiencing India for the very first time. This is a beautiful country, there is so much to see, and I'm from Canada. Very different. Canada's very different. Nothing as lively, nothing as eventful as you see here in India. So I just want to say thank you all for coming. And let me just say something about Shubhu. I'm going to speak to you directly. It's just the two of us. Don't worry. No one's going to hear this. Don't worry. Thank you for being the most selfless person I've ever met. I don't think there's anybody here that would question that. And it is my number one thing that I love about you most of all. How you care for people. Clearly, by the turnout, all her friends and family who have come far and wide, for Shubhu +1, really? Let's be real here. It's Shubhu +1, you know? And let me just say thank you to all four of you, Shubhu's parents, my parents, who have done so much to make this happen. Forget the pandemic, right? Forget COVID-19. Our second family in England, who made the trip down, yeah, there you go. Who have really held out me, my brother, my mom, dad have really held our hands to navigate this whole thing. So thank you to the three of you. Love you too, Ravina. Love you too. Shubhu? I think I've said enough for the night. I don't think so you guys want to see me anymore. You're like, okay, बहुत देख लिया तुम्हें. पहले भी देखा, सुबह भी देखा, कल भी देखना है. बस काफी है. Too much limelight. But I'll just keep short and sweet. I've already thanked everyone, but I'm going to thank you guys one more time. Thank you very, very much for coming. मेरी मम्मी और पापा हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कुछ और कमाओ ना कमाओ, दोस्ती और रिश्ते जरूर कमाना. And that's very, very important, and I see that today. Thank you very much for making sure that that lesson in life is very, very important for our generation, for generations to come ahead. Because aaj ka generation, we do forget how important it is to have that family and quality time. Thank you, Mom and Dad, to make sure that I do get that, because my dad was so punctual. 5 o'clock to 5:30 ke beech mein, my dad is home. And that was it. Me and Ajitesh would sit and we would just talk about family issues or whatever, how our school day was, how was his work. Regardless, I would not understand a bit about his work, but he would still tell us so that it's important to know that we are here for each other. And that's what he taught us all this. There was no phone. We all had phones, but the phones never played any role. So he made sure that we were away from technology and we spent quality time. Travel, I love traveling, Sanjay knows. And
you guys, people who know me very well know that I love traveling, and that quality comes from my dad for sure. Um, you all tell me that I'm a good dancer, regardless if I'm not. I'm just going to say I am. That comes from my mom and all her brothers. Both of them, they're wonderful dancers. वो दिखाते नहीं है, but their expressions are amazing. Mama, both mamas and both mommies, kudos to you guys today. Thank you. That was amazing. I've never seen, by the way, my mommies dancing. This was the first time. So thank you very, very much. And thank you, Ravina. Thank you, Mama and Mommy, for, coming all the way from England and making this happen and making sure that these guys are okay and, helping us all through, making sure we are one family. So thank you so, so much. And all the friends, all the friends. Now about this guy, as much as he says to me that I'm a selfless person, he keeps me grounded too. He's a very grounded man, and that comes from his parents too. So thank you for raising him like that, and this is one of a quality that I really love about him. So I love you, and we're gonna get married tomorrow. Are gonna get married tomorrow. Amazing. It's very surreal, but yes, thank you so much, and we're gonna hand over the mic. We should. They've seen our face. First of all, she said that it's a very crisp, short ending remarks, but it ended up again for 10 minutes. So, so yeah, I mean, this is one thing one thing she said that good friends and family is one of the most important thing, and I think that's something that even I have realized and learned from my parents. So now we are going to head over to book the parties. என்ன தெரியும்டா சொல்ல தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு தமிழ்ல தெரியுமா அவரோட வாங்க யாராவது எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். கொஞ்சம் குழந்தைகளை பற்றி ஒரு சின்ன இது எழுதியிருக்கேன். என் அறிவு கெட்டின வரையில் எழுதியிருக்கேன். அதை நீங்கள்லாம் ரசிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சரி. Purnima, mic. I'm trying to speak because my voice is slightly coming over. So I will translate what my mom said. She has just written a few words for both Sanjay and Shubhu. So
So she would like to narrate that and hope you will all like it. என் அன்புள்ள சிரஞ்சீவி சஞ்சய்க்கும் சௌபாகியவதி சுபாங்கனா என்னும் ராதிகாவிற்கும் அநேக ஆசிகள். மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீ நரேஷ் மாருவிற்கும் ஸ்ரீமதி பிரீத்தி மாருவிற்கும் என் வாழ்த்துக்கள். ராதிகா. My sincere blessings to dear Sanjay and lovable Shubhangana and Radhika, alias Radhika, and best wishes to respected Naresh Maruji and Preeti Maruji. ராதிகா, இப்பவும் நேற்று தான் நீ எங்கள் வாழ்வில் வந்த மாதிரி உள்ளது. அதே சமயம் எங்கள் உலகமே உன்னை சுற்றித்தான் இருந்தது. அந்த குளிர்கால இரவில் உன் அம்மா தனக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்த செய்தியை தெரிவித்து எங்கள் முகத்தில் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியதை நினைத்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டோம். Radhika, it feels like only yesterday that you came into our lives and our whole world was centered around you. I still remember thinking out loud when your mom conveyed the news of the beautiful, cute little girl born to her on that wintry night, which made us proud, brought happiness and warm smile on our faces. வளரும் பொழுது நீ மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் அழகாகவும் இருந்ததால் சில நேரங்களில் என்னால் உன்னோடு போட்டி போட இயலவில்லை. திடீரென்று நீ ஒரு வசந்த காலத்து பூ மாதிரி மலர்ந்து வாழ்க்கை உன்னை எங்கு அழைத்து செல்லும் என என்னால் கற்பனை செய்ய முடிந்தது. Growing, you were so active and beautiful that you sometimes sapped my energy and I couldn't compete with you. Suddenly, you bloomed like a springtime flower and I could only imagine where life would take you. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அடியிலும் நீ எங்களை பெருமைப்படுத்தினாய். ஆனால் திருமணம் என்றதும் உன் கண்ணில் ஒரு பிரகாசத்தை பார்க்கிறேன். உன் இதயம் இன்னொரு இதயத்தை கவரும் அழகில் ஒரு மெலடி பாடுவது போல் தெரிகிறது. You made us proud in each and every step of our life. However, I could see the brightness in your eyes. The moment your wedding was announced, your heart attracting another heart feels like singing a lovely melody. நீ எங்கள் வாழ்க்கையில் சூரிய ஒளி மாதிரி பிரகாசமாய் இருந்தாய். அதுபோல் சிரஞ்சீவி சஞ்சயுடன் திருமணம் முடித்து புதுமண வாழ்வு தொடங்கும் போது என்னுடைய மற்றும் தாத்தாவின் அன்பு ஆசிகள். நாங்கள் எப்பவும் உன் மகிழ்ச்சிக்காக எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். You were like a bright sunshine in our lives. Similarly, as you start your new life journey with Sanjay, along with your grandfather, shower our abundance blessings, best wishes, and I pray Almighty for everlasting happiness in your life. சஞ்சய், எங்கள் பேத்தியின் சிறந்ததை நீ வெளிக்கொண்டு வந்ததற்கும் வாழ்க்கையை சிறந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வைத்ததற்கும் மிக்க நன்றி. அதேபோல் உன் தாயார் தகப்பனாருக்கும் எங்கள் நன்றி. Sanjay, thanks for bringing out the best in our granddaughter and for making her see life from a very enlightening perspective. Thank you very much to your father and mother too. Today I have the honor to give you the best gift of our lives and we trust that you will put her first in everything you do. சஞ்சய், இன்று உனக்காக எங்கள் வாழ்க்கையின் மிக சிறந்த பரிசை வழங்குகிறோம். நீங்கள் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் அவளுக்கு முதலிடம் கொடுப்பீர்கள் என நம்புகிறோம். சுபாங்கனா, காலாகாலத்தில் உங்களுக்கு புத்திரபாகியம் ஏற்பட்டு உன் மாமியார் மாமனாருக்கு மரியாதையும் அன்பும் பண்பும் ஏற்படுத்தி உன் மைத்துனன் ஸ்ரீ அஜய்க்கும் பெருமையும் சேர்க்க வேண்டுகிறேன். அதே சமயம் உன் பெற்றோரின் பெருமையை இழக்காமல் அவர்களிடமும் ஸ்ரீ முகுந்திடமும் அன்பாக இருக்கவும். நீங்கள் இருவரும் இணை பிரியாது நோய் நொடியின்றி தீர்காயுசுடனும் தீர்க்க சுமங்கலியாகவும் குரு அருளாலும் கடவுளின் அனுகிரகத்தாலும் 100 ஆண்டு காலம் வாழ நான் அனவரதமும் வணங்கும் ராதிகா கண்ணனின் அருள் என்றென்றும் கிடைக்க நான் மனப்பூர்வமாய் வேண்டுகிறேன். உன் அன்புள்ள பாட்டி லலிதா. Shubhangana, I bless you to have a child at an appropriate time which would bring more happiness into your lives. Hope I pray that you would bring respect, love, trait and pride for your father-in-law and mother-in-law and brother-in-law Ajay, which
would make your parents proud and happy. Also, you would continue to give your love and appreciation to Ajitesh Elias Mukund. Finally, I pray the Lord, Radhika and Kannan, that both Sanjay and Shubhangna to be inseparable, free from illness, and lead a long, healthy, happy, and successful life with blessings of all gurus and Almighty. Your lovable grandmother, Lalita Ramakrishnan. Now, we want party to give few lines. ராதிகா என்னுடைய செல்ல பேத்தி, அவளுக்கு இந்த மாதிரி வரன் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். அவள் மேலும் நல்லபடியாக நன்றாக இருக்கணும். மாமியார் மாமனாரிடம் அன்பாகவும் ஆதரவாகவும் இருக்கணும். எல்லாம் நல்ல சந்தோஷத்தோடு இருக்கணும். சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். அவ்வளோதான். She just said, Radhika, you are my favorite granddaughter, and I hope you live a long, healthy, and happy life, and make sure you not only make your parents proud, but make your in-laws and the new family proud. She also said that I'm very blessed to have found Sanjay and the family. It's a beautiful family, and she wishes that we all stay together as one happy big family. Testing. Ladies and gentlemen, it was a surprise. They just told me I was up next for the speech. So I haven't prepared any speech. So I'm just gonna say a few words impromptu. As Sanjay explained, this was his first time in India. And I am coming back to India after 40 years. And it is such a great pleasure to be back to our home country. Although I wasn't born here, I was born in Nairobi, Kenya. And my wife, Preeti, is raised in England. So we don't have any direct roots to India up until now. That we have Shubhangna, who's connected us, Sorry.
So what I would like to say is, first of all, thank you very much, Vishibhaya and Chitra, for having Shubhangna, because what they did all these years is they raised her for us. And she is such a wonderful person. She has blended so well with our family, and we are so proud of her. And everything she does, she takes care of everybody, all the family, all the friends, everybody, all the way from India to Canada to US, everywhere who's connected with us. She thinks of them and takes care of every occasion, every good occasions we have, any bad events that have, she's always there to lift us up. So I'm not going to speak too much, but I will definitely say once again that we are very, very proud of her, very happy that she has come into our lives, and is now part of our family. So thank you very much, and I will let her speak, my wife speak now. Go ahead. Thank you. Yeah, that's okay. Yeah. So what I want to quickly say is, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश कर लूँगी. So मैं तो मिक्स बोल दूँगी. So my son is raised in England. In Canada, and he's been raised with, cultural views, and we're pretty liberal in so many ways. Never did I ever think for a moment this boy will bring such a beautiful, cultured girl from India. And he used to play with non-Indian friends all the time, eat non-Indian food all the time. And one day he brought home Shubhu for a Christmas dinner. And we all mixed and we talked, and Shubhu left. And then we talked amongst ourselves, and we said to each other, we would only be so lucky to have a daughter-in-law like Shubhu. And I think Bhagwan ne hamari sun li us din, that he definitely heard what we wanted, and look what happened. So thank you, Sanjay, for bringing Shubhu into our lives. Not for a moment have we ever regret your decision. So thank you to both of you. We love you. Thank you to your parents. They have worked for months and months, day and night. Itni mehnat ki hai aapne to put this event together. So thank you for that. Thank you for taking care of us. Thank you for welcoming us, our family here. We just couldn't ask for anything more. So from the bottom of our hearts, we thank you all. And thank you everybody for welcoming us today. Thank you. Thank you. Love you too. Thank you, and love you all. Ajay, do you want to say something? Feel free. Before I make the final statement. Basically, to put it short,
I've always been told, marriage is about making sure that, the two people are each other's best friends. And knowing this guy from birth, I can say, thank God or whatever it is we want to pray to, that we have somebody in our lives who clearly has the personality to be this guy's best friend. They don't come very often with the kind of interest you and I have in life. So, thanks for existing. Thanks for, producing a person like that, and and continuing to raise a person like that. They don't come very often. Ajadish, where is he? He and I know, I'm a very first principles kind of guy. I don't just want explanations, I want to know how it happened from the very beginning onward. And the main advantage of waiting 5.5 years to have a brother is I got to see him right from day one, when I didn't even know how babies work, to be honest. I was just told, you're about to meet this person while being driven to the hospital, and by total surprise, I found out he was this, tiny little thing on the hospital bed as a newborn. I always envisioned when I was about 5 years old, just, one can dream, Our interests are pretty unique, not everybody is into journalism, not everybody is into the stuff we were into as children. And I always thought to myself, as I'm watching television, it'd be nice to have a person, standing next to me who can relate to this stuff. Because I had an idea that doesn't come very often either. And at 2 years old, he started making television references at 2 years old that, is like, okay, this guy's pretty gifted here. We're gonna get along quite nicely. And yeah, thanks for existing, and as I said before, thanks for powering through the pregnancy. I know that was a very painful experience, as I have said before, but I can't stress that enough. It took a lot for this guy to exist, and yeah, thank you all for doing that. No, seriously, we have to acknowledge human existence, because it's a pretty unique thing in this world, as those among us can relate. Thank you very much. This is my first time in India as well, by the way. And you've all been wonderful. I've heard great things about this country, and I look forward to seeing billions and billions and billions of more great experiences, all the way from the north to the south, from the coast to the mountains. There's more to come, I hope. Yeah, I'll be back again in the next few days, but hopefully I'll be back here over the years. You guys have been wonderful, and we hope to see more of you guys. And we hope to see you guys in Canada with us. You guys have been great. So thank you very much, and thank you very much. So I think it will be my final speech from our side. People have been very patient for so long. I prefer I'll take another 10 minutes. In fact, my voice, I lost my voice for the last 2 days. But somehow I thought of writing down my emotions one by one, and try to, over the night, and then try to print it this morning by sending it to an email and going to the computer shop, which nobody knows, and when I went and got it. So after having done that exercise, because somebody has to read it for me, so they won't know, that's the reason I was doing this. But anyway, I will now have a little bit of voice. Hopefully you will be able to hear me out properly. So let me start by reading it straight away. As Shubhangna's proud parents, we were asked to give a speech, and Chitra has asked me to take on this responsibility, which means I have the full liberty to share my views. I'm a little anxious and emotional today, so please bear with me. I feel so good from my heart. Thanks to one and all for coming and being part of our family, sharing our joy and making this evening a very wonderful evening. Without you, it would not have been that wonderful as it is now. Thank you. Thank you, everyone.
A special thanks to Sanjay and Maru family for being here. A special thanks to Ravina, her parent Mr. and Mrs. Doctor, my younger sister and brother-in-law Uma and Murali, all of whom have come all the way from Canada and London. Also my mother, brother, mother-in-law, brother-in-law and their families, friends and relatives from different part of the country who have all come from far and near for this special occasion. I would also like to thank my former colleague, Caroline, and her husband, David, for accepting my invitation and have come all the way from Australia to be part of this event. And similarly, my another colleague from the Australian High Commission, Belinda, and her mother, who joined me yesterday in the celebration. I will also mention people who cannot make it today. My dad and sister, who passed away 4 years back, and my wife's father and my father-in-law also passed away. They are all watching from heaven. Thank you. If I missed anyone, I apologize. We are all gathered here today to bless and celebrate the union and future of Shubhangana and Sanjay, as informed by Purnima yesterday. She was also correct in saying marriage is a sacred tie, a union of two souls, and the coming together of two families as one big family. Today we are not here as the grooms or the bride's family, but one big family. My daughter is in heaven. Yeah, I really mean it. Nothing less. As Chitra and I look at our daughter, the bride, we can't help but reflect on all the years we were lucky enough to watch her grow and become the beautiful woman she is today. Doesn't she look beautiful? Sitting there with Sanjay, they make a beautiful couple. She captured our heart on the day she was born. She is our little girl, my princess, and our ray of sunlight. And no matter what her age, she will always be those things to us. Now a bit about Shubhangana. A small princess, Shubhangana came to our house, but she grew up quickly. The smile of her daughter is so sweet from the beginning. She came into the world a week before, and we were all excited. Both grandparents, Mama, Chacha, Aunt, all. My in-laws were proud and happy that their daughter gave birth to a daughter and distributed sweets in the community. They also conveyed to my wife that she will be her best friend. Dada and Dadi also came from Delhi and brought happiness with them. But no one knew she is Daddy's princess. As she grew, she excited in dance, fulfilling her mother's dream, won many laurels in school, colleges, and in open competition. She has also won medal for making positive difference in community through dance. In all this, her mother was her first guru, but she continues to be Daddy's princess. She was always smiling, kind, generous, playful, intelligent. She was my heroine. She did not need any makeup. She was a beauty pageant, a dancer, excellent cook, everything in one. When her mom fights with me, she gags up with her mom, and then, okay, I realize every moment and every day is a Women's Day. It is more common for brothers and sisters to fight. However, when Ajitesh was born, she managed him, cared for him, making sure his diapers are changed and he was fed when hungry, and also took care of him when he was feeling sick. She became a caretaker most of the time and acted as a mother to him. When me and Ajitesh are at crossroads, she ensures that she strongly stands behind Ajitesh. Whatever Ajitesh is right or wrong, she sees that I back out. That's how she loves her brother and our house. I literally back out. In spite of all this, she is Daddy's princess. When she started knowing the world, our main fear as a parent was she should not make any wrong decisions in life. But once we got to know Sanjay, we feel we couldn't have chosen anybody more suitable. I cannot thank him enough. So Sanjay, thank you. I would also like to thank Naresh ji and Preeti ji for treating my daughter as their own daughter. This very same impression was conveyed by my sister and brother-in-law, who were the first one to meet Mr. Maru family on our behalf. They vouched that Mr. Maru family is the best, and this they reiterated
during the recent reception time as well, when they were addressing the reception. As parents, we can also confirm their beautiful relationship, which I have witnessed in the last 2.5, 3 years. For our friends and relatives here, Shubhangana was well trained in cooking by her mother, and that helped her creating a stronger, more comfortable bond with Sanjay. She started sharing her homemade lunches with him, and in return, he offered her lift from her place of stay to the college while studying in Canada. Shubhangana, you have chosen a wonderful person. Sanjay, whom you brought into our family 3 years ago, and that time everybody in our family, both from my side and from my wife's side, said, लड़का बहुत अच्छा है, suitable है, टीवी में regularly आता है, जल्दी से शादी कर दो. Let me translate it in English. The boy is beautiful, regularly comes in TV, and more suitable. So get her married soon. But for us, he was much more than that. Smart, intelligent, compassionate, and best of all, he loved my daughter. My daughter is in the safest hands. I sleep a good sleep. No worries. Previously, I used to worry. Tell her to come home early, not to do this, not to do that. But now she is in safe hands. Still I miss her. I love her because she is daddy's princess. Yesterday and today, before we started dancing, me and Shubhangana, I was nervous. Shubhangana said, Dad, don't worry. Follow my footsteps. I will take the lead. Don't be nervous. And I developed a confidence. I looked at her face. She looked so beautiful, smiling like her mother. And she looked so intelligent, smart, and she had the confidence of her mother. I would like to say me, but I will be generous. Watching her dance with me, I knew she was ready to enter her next journey in life. Shubhangana, I urge you to keep looking ahead, and if at any time you get upset with your dad, mother, or Ajitesh, you say to us, where are you? You didn't call me, you didn't answer my phone. You don't see us. Close your eyes and look deep inside your heart. You will find us. We will be there, always there for you. You can't see us. I would like to tell you, if there is a next birth, be our doctor and my princess, Mr. and Mrs. Maru. She was the happiness of my home, and now light up your home. If at times you think that my daughter has said or done something wrong, feel free to scold her, but handle her with love. She is very fragile. If at times she feels low, but with her, be with her. She just needs a little bit of your attention. If at times she feels sick, show her some care. It is the medicine that works best for her. If at times she fails to fulfill a responsibility, feel free to correct her, but empathize with her. She is still learning. Although as parents, I made this statement, but we have realized over the last about 3 years of our association with you, the sort of love and affection she is receiving from you and your friends and relatives is beyond our imagination, and you have kept her very happy. Thank you. Finally, everyone here, please join me today in wishing Shubhangana and Sanjay every happiness possible and long and joyful life together as husband and wife. As Shubhu mentioned yesterday, she wants everybody to dance, as she has been dancing on everybody's marriage she attended. The dance floor is open also. I don't know whether anybody will be willing more because we have already lost the time. So thank you so very much for this opportunity. Thank you. Thank you so much. I think I have also talked on behalf of Chitra. If you still want to say a few things, feel free. God is great that He has given me the voice today. Otherwise, for the past 2 days, I was thinking, how do I share my emotions?
So I'm able to do it today. So thank you so very much. It is a very happy ending. It is not that we are sad. I'm very happy for all the things. Thank you. हलक तेरा पतला just move it round and round मैं तेरे उतवारा dollar euro pound मन ले तू है किते आंदी शके मन है किते आंदी शके tell me why don't you come and dance with me गोड़ी नाल इश्क मिठा गोड़ी नाल इश्क मिठा रब्बा लगना किसे नू जावे गोड़ी नाल इश्क मिठा गोड़ी नाल इश्क मिठा ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ
Thank you.